On the 15th of August 2022, Prime Minister Narendra Modi from the Red Fort announced that the upcoming 25 years are going to be for women and that he wants women to contribute into the success of country. Ladies and gentlemen, I'm Krishna Patel and welcome. You're watching Nation Plus News, no fear, no favor. Now, as we speak of these upcoming 25 years, as Prime Minister Narendra Modi has announced that he wants women to come up and women to get even more empowered. But in the past couple of months, the incidents that have been occurring, they are a proof, or they are proving that the Indian men are intentionally or unintentionally not in favor of what the Prime Minister has said. Joining me tonight is with us Mrs. Shobna Rawal. She is the chairperson of MSS. We have been joined by Shikha Pandey. She is an activist for animals and she is also someone whose story we will be telling you tonight. We have been joined by Radhika Barai. She is the ACP Vadodara Police and she also looks after the SHE team of Vadodara. And we've been joined by Dr. Bhavna, who is the HOD on the HOD of Faculty Social Work, MS University. Thank you all of you beautiful ladies for joining us tonight. So before we start, let us also talk about the fact of how we cannot change the psychology of the world, of the country overnight. But let us not forget the fact that when that change will be profound, it will be lasting, which is so much more important. So, as we speak of Shikha Pandey, as I told you, that she is the girl, she is the woman whose story we will be talking about, or that will be emphasizing tonight. As Prime Minister Narendra Modi said from the Red Fort that the upcoming 25 years are going to be focusing on women and that he wants women to come up. There have been two recent incidents that happened, one by the MNS leader, MNS volunteer that happened in Bombay, where he was seen hitting an elderly woman in Kamatipura area. And the second one that we will be talking about tonight, also let's not forget the Karnataka incident that just happened. Shikha, thank you so much for being with us tonight over here. Yeah, thank you. Shikha, we heard about what happened with you and the fact that you complained on how a PI behaved with you and how things with him have been bothering you lately. Shikha, tell us the whole incident and how have things been going on currently. Okay, am I audible? Yes, Shikha, a little bit louder you'll have to be. So this incident started on 30th of August, where a female named Priyanka Banerjee, she captivated and she held about 85 dogs at a bungalow. She was not even a registered NGO or anything. They had about 25 to 30 cats. They also had birds, a blind horse, a donkey, and everything in one farm. The worst part over here was, being an animal activist, we used to help her as much as possible. They started having issues personally with the father, with the husband and stuff, and we would not intervene enough. But then one day we came to know that somehow there were a very worse cruelty going on inside that bungalow, where about from 10-15 days nobody used to feed the dog, and for 30 days there was nobody in the farm. And the reason we went there and we had to request the cops to raid the place and to check what exactly is going on. The cops were shocked to see, the media was shocked to see, but what shocked us was that we did not get the help from the police station at all. The moment we gave all the proofs, they denied us to file an FIR. After that, we requested them to at least take the application. We fought for like we fought till 2 a.m. in the morning, and our FIR was not filed. We asked them to take an application for which they agreed to it, but
the PI, the second PI would call us and would inform us that you don't have to file FIR for such cases. And the first PI, I don't want to name anybody, or if you allow me to, I can. But the first PI asked us that कोई cruelty नहीं बनती है. This is not a cruelty. It's okay. Shikha, you are allowed You to just say when whatever you name you want sit to take. and talk. Yeah. So the this police station that I'm talking about is police station in Manjulpur, Baroda, Manjulpur, where PI Ahir sir and PI Waghela sir, the second PI. Waghela sir has been harassing me continuously from past 3 days. From past 3 days, he says something in a call and then he denies his word when we are in the farm and trying to rescue the dogs with the permission of the owner. Then yesterday I was badly insulted and harassed by the PI, saying that I never allowed you when we said that we have the proof, we had the recording that you asked us to go and get those dogs out. The dogs were suffering very badly. We had to get them treated. And thus we went. And out of nowhere, Priyanka Banerjee's father is coming and blaming us, calling the cops. And the worst part over here is for everything, the father is not going legally. He's directly calling the PI Waghela for every small thing. And Waghela sir calls me every now and then saying, what the hell are you doing? What is this going on? Are you are changing your statements. You are asking us something. You are asking us to do something, and you're changing your statements every minute. And you cannot literally give us the kind of dhamkis that you are saying right now. Right, And he Shikha. asked us to stop. Yeah. Right. Now, before we move to Shikha's incident or what is happening with her, to all you beautiful ladies, I actually want to ask you the first question that it's been 75 years of independence. We are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav. So, how much free and azad are you feeling after 75 years? Radhika ma'am, we'll start with you. Ma'am, there's some issue with your audio. Okay. Yes, First of ma'am. all, I would like to comment on what Shikha ji said. Vadodara City Police SHE team is working for women, senior citizen, and children. So I would like to convey her a message that, and if she feels that she has been harassed by anyone, she can always contact the SHE team, and any women, senior citizen, and children who are harassed or who need help, they always can contact the Vadodara City SHE team. We are always ready to help them. Right. Ma'am, 75 years of independence, how azad are you feeling as a lady? Radhika ma'am. Definitely. See, first of all, education and independence. See, education is the basis of independent, we can say. So, I don't think anyone would feel independent if they are not educated enough and they are not self-confident. So, I would like to say I definitely feel independent in basis of my decisions, economic, socially. I definitely feel independent. Thank you. Right, ma'am. Bhavna ma'am, how independent or how azad are you feeling after 75 years? Of course, I feel independent. I'm independent to a woman per se. However, I still feel tied up with a lot of social expectations, being a woman. So while I'm economically independent, I move around as free as anyone else can be. I have no restrictions. I go at any time. I come back at any time. That's not the criteria per se. But still, I think in my mind, I don't feel completely free from social expectations being a woman. And that has to do with internalizing my own, roles that I have to play as a woman. Right. Shobna ma'am, कितना आज़ाद महसूस कर रही हो आप? It's been 75 years. वो तो सही है। मोदी जी ने जो किया है, हमारे वड़ा प्रधान ने जो नारी के लिए वो
कोई भी जगह पे कहीं भी वैसे ही बोलते हैं कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। इसमें वो इसमें फुल स्टॉप आता है। कोई ऐसा नहीं होता है, चाहे कोई भी उसके बड़े पद पे बैठे हो या कोई बड़ी प्रतिष्ठा हो उसके पास, उसका अहम उसको बहुत है। वो क्या बोलते हैं कि उसका अहम ईगो होता है ना, बहुत अप में होता है, तो वो किसी का मान सम्मान नहीं करते। जो पद और प्रतिष्ठा है ना, वो पचा नहीं सकते। वो लेडीज़ को वैसे ही बोलते हैं कि मेरा ही एक एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। एक मैं लाइजेनिंग वो ज़मीन का भी काम करती हूँ, तो एक ब्राह्मणी था, तो मैंने बोला भैया एक ज़मीन आई है मेरे पास, बहुत बड़ी ज़मीन है, वो खेडूत को वैसे करना है। तो बोले कि ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। 5 बार उसको मैंने कॉल किया, लेकिन वो बंदा आया नहीं। फिर मुझे ऐसा लगा कि उसको ईगो होगा शायद, कि लेडीज़ कर रही है ज़मीन का ले बेच का काम, बहुत बड़ा है, वो सह नहीं पाता है, कोई भी पुरुष हो। जी बिल्कुल। राधिका मैम, शिखा का जो इंसिडेंट हुआ है, क्या ये पर्टिकुलर बात आप तक पहुंची है, या फिर जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, व्हेन सच काइंड ऑफ इंसिडेंट्स अकर, व्हाट इज इट दैट द गर्ल शुड डू? ऐसी कुछ चीजें जो दैट शुड गो आउट टू द सोसाइटी, दैट व्हेन गर्ल्स फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, व्हाट शुड दे डू? मैंने अभी आपको बताया कि वडोदरा सिटी में शी टीम काम कर रही है, हर पुलिस स्टेशन में शी टीम है। तो और शी टीम का एक सेंट्रल ऑफिस भी यहाँ पर पुलिस भवन में है। तो अगर वडोदरा सिटी में कोई भी महिला, बच्चे या फिर कोई सीनियर सिटीजन, उनको कोई भी इश्यू हो या कोई हेल्प चाहिए, तो वो एनी टाइम शी टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं। और शी टीम काउंसलिंग भी करती है। अगर कोई इश्यू है तो काउंसलिंग करते हैं, हम रोमियो डिकोइस भी करते हैं। तो अगर कोई आपको छेड़ रहा है और आप कंप्लेन नहीं भी करना चाहते, आप एटलीस्ट हमें बताइए, तो हमें पता चलेगा कि ये प्लेस पर ये हो रहा है, तो हम डिकोई करेंगे वहां पर। तो टपोरी डिकोई भी शी टीम करती है। तो मैं सबको आपके माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो वो वडोदरा सिटी शी टीम का कांटेक्ट कर सकते हैं। Right. Shikha, why didn't you contact anyone else when the PI or who was bothering you so much? Why didn't you try and contact She Team or any other women social activist? Okay, so I myself is an activist working for animals from past 15 years and filing cases and FIRs on the basis of the laws, taking into consideration the laws. And last time, I remember a last case where me and a co-activist were there at some place, and a man is coming out of nowhere just to take away my phone and trying to, use his hand. With being a woman, and I can defend myself. But that was the time when I called She Team, and I was said that, do you have the police with you right now? I said yes, but I only have one officer with me, and in front of us there are about 100 of people who are fighting with us. When we said that, we requested the police official well in advance before going ahead with the case, that we do need a lot of officials. That's the reason I called the She Team, because I know that where I am having an issue as a woman, I can easily call up the She Team. But She Team did reply me saying that, ma'am, because you already have a police van and a police official with you, you just give the call, we will speak with them, and then everything will be taken care accordingly. So this was the last time. I remember this happened about 1 month back. Today, being an activist, being considering my fundamental rights and fundamental duties, I did something. We, with the women, with the females together, we had been trying to speak with the female officers as well who accompanied the van today. And one of the, I should not be using this in the on the national television, but I will now. One of the person one of the driver who came in that van, who came in that police ki gaadi, used a word called you Randi to one of my female activists, because she was just taking the videos, which is a part of compulsion.
We informed the PSI about the same when he was at the location, and he advised us to take the strict action. There were two female police officials who I had seen taking care in Manjalpur police station from quite some time. But when we told them that you are a woman, be it this man is calling this word to any other woman, he should not use such words. He has no right to use such words to any woman around. Right. He was giving the explanation that I did not use it for your activist. I was using it for the other police official, the female police official who was taking time to come over here. राइट शोभना So जी this was the जैसे expression. राइट राइट शिखा शोभना जी जैसे शिखा ने अभी कहा कि कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था व्हेन द पुलिस केम टू सी देम और अभी मुख्य अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये जो एक छोटी छोटी बातों में भी विमेन को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है वो बंद करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि लॉफुली ऐसे सिचुएशंस में महिलाओं को क्या करना चाहिए? इसमें पूरी जो कोई भी बंदा हो, कोई भी, उसके सामने पूरा केस बनना चाहिए। वो उसको वैसे ही मान सम्मान, लेडीज़ को कितना, नारी शक्ति को कितना मान सम्मान चाहिए वो अपने फैमिली में से ही सीख के आता है और उसका संस्कार में से ही वो उसको आता है। उसके घर में माता पिता जो होता है, वो पिताजी, उसका मदर, वो उसकी मदर को इतना रिस्पेक्ट नहीं देते होते। ये संस्कार है। घर में कोई भी, घर में हमारी बेटी हो, माँ हो, बहन हो, जो भी हो, हमारे बेटे हो, भाई हो, या हमारा हस्बैंड हो या पिता हो, कोई भी हो, उसको ऐसे ही जवाबदारी है कि हम लेडीज़ के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं तो हमारे बच्चे वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वो बाहर करते हैं। ये संस्कार होता है। फिर और उसका थोड़ा एजुकेशन होता है, वो भी फैक्टर काम करता है। इसमें जो कोई भी बंदा कोई भी लेडीज़ के साथ ऐसे गैर वर्तन करता है, गाली गपोची करता है, उसके ऊपर मारपीट करता है, ये बहुत पूरी गलत बात है। इसमें पुलिस को पूरा साथ देना चाहिए, नहीं कि उसके सामने उसको बचाने के लिए एक लेडीज़ को न्याय मिलना चाहिए, नहीं उसको अन्याय करना चाहिए। जैसे शिखा ने बोला है कि उसके साथ ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ है। इसमें वो भी एक बात है, पुलिस वाले को इतना काम होता है। मैं पुलिस के साथ में 35 ईयर्स से मैं काम करती हूँ, मुझे पूरा अनुभव है। पुलिस वाले उसके घर का, फैमिली का कोई फेस्टिवल, कोई उसका घर का भी फेस्टिवल हो, कोई प्रसंग हो, अच्छा हो बुरा, कोई भी प्रसंग में वो एविडेंस, मतलब वो अटेंडेंस नहीं दे पाते फैमिली के साथ, वो पूरा काम करते। हाँ, लेकिन कोई ऐसा अधिकारी होता है, कोई भी पुलिस वाला हो, तो उसके पुलिस अधिकारी के सामने ये बात आनी जरूरी है कि वो माँ बेटी जो गई थी उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ, ये नहीं हुआ है, ये गलत है जी। एक्शन लेनी चाहिए जी। डॉक्टर भावना, यू आर अ सोशियोलॉजिस्ट एंड हाउ डू यू सी द सिचुएशन? आप इस पूरे सिचुएशन को किस तरह से देख रही है एज अ सोशियोलॉजिस्ट? I think what Shikha presented about her incidences, both the incidences, I feel there are multiple factors what have played a very important role. One is, whether police felt Shikha was trying to intrude into their role or intrude into someone's privacy, which probably they did not accept Shikha to do. That's why they behaved the way they behaved. That could be the reason. I don't know the full context, but whatever she presented. So I'm just, based on my understanding, I'm giving my feedback. Second, whatever that police, her incidences what police were, in terms of lodging an FIR or in terms of misbehavior of the police, in the first incident which she said narrated as well as in the second incident, it is a man's inability to accept a woman being assertive and wanting to take a stand in life. Because Shikha, being an activist herself, wanting to do something, men don't find it very easy to accept कि कोई लड़की अपनी बात इतनी मजबूताई से रजुआत कर सकती है, अपनी डिमांड रख सकती है, and probably she was forcing them to do which they did not want to do. So it was also retaliation to that. So Right. whether a man is a constable or a police inspector, when you tell them आपको ये करना है, men don't like to hear this.
आप कोई पुरुष को बताओ कि आपको ये करना है, वेदर इट इज अ फैमिली पर्सन और इट इज आउटसाइड और एज अ वुमन बॉस, when you tell your subordinate who is a man and आपको उनको जब बताते हैं कि आपको ये करना है, they find it difficult to accept. There is a resistance, and this is a retaliation which I feel which Shikha has experienced. राइट राधिका मैम, हमारे पास इतनी अच्छी इतनी बड़ी पुलिस की टीम है, हमारे पास शी टीम भी है, तो फिर भी उसके बावजूद जैसे हमने देखा कि देश में हाल ही में जो बॉम्बे में हुआ या कर्नाटका में हुआ या फिर शिखा जैसी लड़कियों के साथ जो रोज होता है, तो हम कहाँ कमजोर पड़ रहे हैं? वेयर आर वी लूजिंग इट? वेयर इज वेयर आर वी सीइंग व्हाट आर द शॉर्टकम्स दैट वी आर नॉट बीइंग एबल टू कोप अप विद दीस सॉर्ट ऑफ क्राइम्स? आई वुड लाइक टू से, अगर मैंने जैसे पहले भी बोला है, अगर किसी को दिक्कत हुई है, जो शिखा जी बात करे वो किसी बंदोबस्त की बात करे, मुझे लगा है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, तो अगर उनको दिक्कत हुई है तो वो इस बात को, अगर उनके साथ किसी ने मिसबिहेव किया है तो डेफिनेटली उनको वो बात रिपोर्ट करनी चाहिए। जो पुलिस स्टेशन में ना करे तो उनके सीनियर लेवल्स भी है, उनसे भी कांटेक्ट कर सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई एक जगह से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो पुलिस में बहुत हायरार्कीज है, आप अपर हायरार्की का कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह से आपने बोला कि ये सारी चीजें हो रही है, कॉप अप नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं ऐसा होता है बहुत सारी चीजें। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि हम ये टपोरी डिकोई करते हैं, पहले हमारे पास इतने ये छेड़ती के ऑफेंसेस इतने रजिस्टर्ड नहीं होते थे, लेकिन जब से हमने किया, हमने अभी तक 100 से ज्यादा ऐसे टपोरियों को पकड़ा है। हमारी पुलिस की ही जो महिलाएं हैं वो सिविल ड्रेस में जाती है और डिकॉय करती है, और उसमें जो भी कोई आदमी ऐसा मिल जाता है जो इस तरह से मिसबिहेव करता है, छेड़ती करने की कोशिश कर रहा है, तो उनके अगेंस्ट हम एक्शन लेते हैं। तो इसका एक रिजल्ट ये आया कि महिलाओं को, लड़कियों को पता, ऐसा उनका बिहेवियर में चेंज है कि एटलीस्ट वो रिपोर्ट करने लगे। पहले जितने रिपोर्ट्स नहीं होते थे उससे ज्यादा हमने ये टपोरी डिकोय की सबको अवेयर किया, उसके बाद ये रिपोर्ट्स होने लगे। तो मतलब धीरे धीरे, आपने जैसे ही बोला, ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवर द नाइट ये कोई चेंज आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हमने ये चेंज देखा है पिछले 8 महीने में कि ये करने के बाद इतना चेंज आया है। तो कोई भी चेंज ओवर द नाइट नहीं आ जाता, लेकिन धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें तो डेफिनेटली हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। डेफिनेटली मैम। एक बात बताऊं कृष्णा, इफ आई मे ऐड टू व्हाट राधिका जी इज सेइंग, एक बात बताऊं जी। दिस इज व्हाट राधिका जी सेड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 1990 से 92 से डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यानी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, आज 40 साल से हम जो बात कर 30 साल से जो बात कर रहे हैं, उसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन की पूरी बात है कि जहां जहां भी औरतें काम करती हैं, या तो जो जो भी मशीनरी में औरतों के साथ काम करना होता है, चाहे वो पुलिस हो, जुडिशियरी हो, लीगल फ्रंट हो, आईएएस ऑफिसर्स हो, वहां वहां सभी पुरुषों के साथ महिलाओं के साथ किस तरह से काम करना चाहिए, उसकी एक पूरी मिशनरी काम पे गांव सरकार ने लगाई है। और माननीय वड़ा प्रधान जी ने भी यही बात को इतनी स्ट्रॉन्ग से तरीके से रजू करी है कि हर एक डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी आजकल जहां जहां भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वहां हर पुरुष को इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स में अटेंड करना कंपलसरी हो चुका है। तो जब जब ये बदलाव आया है, 30 साल पहले जो था और आज की हम बात कर रहे हैं, तो महिलाएं ज्यादा सब पब्लिक क्षेत्र में आई है, काम करने को आई है, बाहर आई है, और पुरुष भी ये स्वीकारने को तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं। मगर जैसे राधिका ने बताया कि ये एक स्लो प्रोसेस है जिसको टाइम लगेगा, मगर हम अगर हर कोशिश करते रहेंगे, इस तरह के कार्यक्रम करेंगे, तो लोगों में, मानसिकता में हम जरूर बदलाव ला पाएंगे। I am sure. Shikha, over the years there has been this conditioning to the men, we'll say it conditioning only, that physiologically women are weaker than men. And do you think कि ये एक वजह है, this is one of the reasons why men have that little bit of I am something or I'm stronger than women feeling in them? Have you seen it happen somewhere? If you could just share one of your incidents apart from the one that you just shared.
Well, there are, I don't remember as of now, there are a lot of incidents that have happened. But this is about like, education. Education, I'll consider that as my strength. Because I'm educated, because I'm aware of the laws, and because I go with the laws, with the legality part, there are a lot of things I know as a woman when I have to go ahead and compete with a man. First of all, I won't use the word compete actually, because it is said that when you are in a co-ed when you are in a co-ed education, in a co-ed school, this is something a man and a woman and a girl and a boy are going together. So there is nothing about competition. We have one of our the ma'am is right here in front of us, heading and leading the she team. So the thing that all the ma'ams who has expressed here about keeping into mind how the women should how the men take women in certain ways, I'll simply say this, that it's not always about, like, see, a lot of times when I go and file the cases, no, a lot of times the highest officials, they convince us by saying कि पुलिस की ड्यूटी कैसी होती है, एंड समटाइम्स दे गेट सो मच, दे हैव सो मच इनटू देम, इसीलिए वो ऐसा बोल जाते हैं. दिस इज वंस, देन सेकेंड, देन थर्ड. बट इसको अगर आदत बना देते हैं ना, और इसको अगर यूज टू गो टू बना देते हैं ना, देन इट इज डिफिकल्ट फॉर अ वुमेन लाइक अस हु आर फाइटिंग for the not only being an animal activist, fighting for the animal, fighting for my respect, my self respect. I can leave everything, but I have to I have to keep my self respect intact, for which I do everything possible. And no, not anybody in this world, like, not any someone will just come and insult me out of nowhere, right? I am a person who is educated, keeping into things like, when I know the laws, when I know the values, when I have the moral in me, a man in front of me should also have the same. We cannot expect it though, but at least we can have that sense of the sense of belonging should be there with that Right. also. I don't Right. want to give any example over here right now. There are a lot of cases we fight and a lot of cases we take care of. Lot of I won't say कि physically, but mentally torture भी काफी बार ऐसे हुए हैं. They say words out of nowhere. And sometimes a woman also go through such an anger listening to such words that she may also reply. So I Definitely. won't here consider any man कि हर कोई एक जैसा होता है. Just because मांजरपुर पुलिस स्टेशन में हमारे साथ गलत हो रहा है since 6 days, I will not accept the part कि और पुलिस स्टेशन में भी ये हो रहा है. There are lot of PIs, PSIs helping us in and out, including the constables, the male constables. डेफिनेटली. शोभना More मैम. than a women, कई बार ऐसा है कि men भी हमें इतना समझ रहे हैं. That is more जी. important over जी. here. शोभना मैम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कि जो महिलाएं हैं, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात पर्टिकुलरली करते हैं, तो बहुत सारे मेन, बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो नहीं छोड़ पाती उनके हस्बैंड्स को या उनके पार्टनर्स को, जिसके पीछे एक कॉमन रीज़न पाया गया है, और वो ये है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है. और ये इंडिपेंडेंस आता है एजुकेशन से, कि वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, उन्हें जो बेसिक राइट, प्रिलिमिनरी राइट है एजुकेशन का, वो नहीं दिया जाता. यू बीइंग द चेयरपर्सन ऑफ MSS, आप इस चीज़ पे क्या कहेंगी? मेरा ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ. मैं भी ज़्यादा पढ़ी देखी नहीं हूँ, मैं 12वीं तक पढ़ी हूँ, और मेरा हस्बैंड से मैं 15 साल से मैं अलग रही हूँ, और मेरे 2 बेटे हैं. मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता भी नहीं था, लेकिन मेरा हस्बैंड बोल रहा था कि तू मुझे अच्छी नहीं लगती है. उसका संस्कार था वो, उसका संस्कार. अभी तक मैंने घर नहीं छोड़ा है, मेरा घर नहीं छोड़ा है, लेकिन मैं छोटे सामाजिक कार्यकर हूँ पहले से, और मैं लाइसेंसिंग का भी और वो भी काम करती हूँ. धीरे धीरे मैं वैसे काम में अप आ गई. तो ऐसे मेरे बड़े भैया है, तो उसने भी थोड़ी मदद की, और मैंने अपने आप मेरे 2 बेटे को पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया. इसमें पढ़ाई की ऐसी ज़रूरत ही नहीं है. हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और हमारा मन जो मक्कम होना चाहिए, दिल से मजबूत होना चाहिए. ऐसे पढ़ाई जरूरी है, ऐसे वही मैं मानती हूँ, लेकिन मैं भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ.
लेकिन मैंने 2 बच्चे को ऐसे पढ़ाया और वो बड़ा किया और उसकी शादी की, एजुकेटेड किया है मेरे 2 बच्चे को। जी, लेकिन हमारे में हिम्मत होनी चाहिए। और दूसरी बात बोलती हूँ कि हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, कभी बार बहुत सारी बहनों दिक्करियों मेरे पास आती है, बेटी आती है, मेरी ऑफिस में आती है, मेरे घर पे आती है, तो बोलती है कि मैडम जी हम जाते हैं ना, तो हम फरियाद करने जाते हैं, वैसे हम आरोपी है ना, वैसे हमारे साथ वाणी और वर्तन होता है। मैंने बोला ऐसा नहीं होता है। नहीं मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे। कभी बार कहीं से पुलिस स्टेशन से वो लोग जाके वापस मेरे पास ही आते, तो उसके साथ मैं जाती हूँ और उसका जो होता है मैं करवाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आपकी आवाज़ थोड़ी बुलंद होनी चाहिए, आप सच्चे हो। कभी बात हम सच होते हैं, सच्ची राय में चलते हैं, लेकिन कभी कभी को कैसी अड़चन आ जाती है, तो इसमें डगडगाना नहीं चाहिए। हमारा मनोबल जो होता है ना, मक्कम होना चाहिए। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसका मतलब ये नहीं। और पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, समझदारी भी जरूरी है। वो बहुत फैक्टर ये है। और वो आप बोल रही है कृष्णा कि इसके पीछे क्या होता है, कि अकेली लेडीज रहती है तो उसके पीछे वो भी है। मैं बहुत सारे टीवी में बाइट देती हूँ, सब कम वो ही करती हूँ, मेरा डिबेट भी होता है, इसमें मैं अवश्य बोलती हूँ कि हर लेडीज को हिम्मत रखनी चाहिए। हाँ, हम सच्चा होते हैं, हम सच बात होती है तो इसमें मैं खड़ी रहती हूँ, गलत बात होती है तो मैं गलत में खड़ी नहीं रहती हूँ। वो राधिका मैडम को भी पता है और भावना मैडम आपको भी पता है कि मैं बहुत सारे केस में काम कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी सारी लेडीज आती है तो मैं उसको वैसे ही करती हूँ। उसको सबको गृह उद्योग भी दिलाया है, सबको सब करा है, लेकिन वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। बता नहीं रही हूँ मैं वो कराया है, वो किया है, वो किया है, वो नहीं। लेकिन ऐसा होता है, अपने आप करो जी, कोई बिल्कुल। पुरुष की जरूरत ही नहीं, हमको क्या जरूरत है, अकेले रह सकते हैं, सब करते हैं। मेरा ही दाखला देखो। Right, definitely. Radhika ma'am and Shikha, both of you are youngsters. There is one reason, or there's one research study that has found out that lot of OTT web series and movies are having influence on young boys. I repeat, young boys, not men. That influence them to in some way or the other use their hand or physically assault their girlfriends or people who are in relationship. Do you think that all of these OTTs are influencing men or boys to do that to their girlfriends? Let us exclude the marital relationships over here. Ma'am, will you go first? Okay. Radhika ma'am. OTT हो, कोई मूवीज हो या कोई भी सीरीज हो, जब देखते हैं तो उसकी डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव सारी इफेक्ट्स आती हैं। जो सिनेमा है वो सारी चीजें बनाई इसीलिए गई है क्योंकि या तो सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से आपने जैसे बोला यंग बॉयज, तो वो नेगेटिव लेते हैं, उनकी इफेक्ट भी होती है। और हमारे पास केसेस भी बहुत सारे आते हैं, जैसे आपने बोला कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कर रहा है, मार रहा है या ऐसा कुछ। और आपने जैसे बोला आसपास पड़ोसी के झगड़े भी होते हैं, या फिर ये यंगस्टर्स वाली जो बात आप बोल रहे हैं उसमें भी डेफिनेटली ये हो रहा है। लेकिन कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता कभी भी, सिर्फ ये ओटीटी या कोई एक फैक्टर को हम ब्लेम नहीं कर सकते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो सब मिलके एक पर्सन के बिहेवियर में चेंज लाते हैं। Right. Shikha, why has physical assault in modern day relationships, excluding the marital relationships, getting normal? And why are girls letting it, become a common thing? Okay, so I'll just put this very straight in giving one example. The case that I'm fighting right now, Priyanka Banerjee. We have helped her out in and out, being an educated and a Western traditional community woman. She has had a lot from her husband. A lot, when I say. She's been assaulted. She has filed complaint about the husband. But when it comes to, we would never ask any woman to leave the husband out of anything. We would counsel them. It is better to counsel them first that you people need to sit and talk with each other instead of going ahead with the divorce or separation. But when the things go beyond and out of the limit, then
we would always suggest a woman to choose herself first. Why take any kind of physical assault for without any reason? I mean, why? Just because? And uh, I wonder, अब के 21st सेंचुरी में होकर if assault सहन करना is that is like I don't believe that part. Right. 21st सेंचुरी में हो आप, आपको असॉल्ट सहन करने की कोई नीड रिक्वायरमेंट है ही नहीं. There are always laws for that. Always fight for yourself. सबसे पहले तो womenizing and womenizers में like I'll use only this word, fight for yourself. Right. And why would any educated person would assault any woman? आई वुड से आपने शादी इसीलिए तो नहीं की थी कि आप फिजिकली असॉल्ट करोगे, आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को घुमा दोगे, व्हाटएवर. बट इतनी भी लिमिट नहीं हो जानी चाहिए कि आपको आप हमें आके ये बोलो कि मैं सब कुछ, मुझे इतनी तकलीफ है अपने हस्बैंड से या व्हाटएवर, पर मुझे रहना पड़ेगा, मजबूरी है. 21st सेंचुरी की वुमेन अगर ये कहती है तो दिस इज नॉट राइट. Right. इतनी भी कोई So, मजबूरी with नहीं this, होती. right. On this note, thank you to all four of you for being here with us. ACP Radhika Bharai, thank you so much, particularly for sparing so much of your time with us this evening. Thank you, Shobna ma'am, for being here with us. Thank you, Dr. Bhavna, for being here with us. And thank you, Shikha, for being here with us. You're all very empowered and strong, influential women of the city. And we are so grateful and we're so happy that women like you are there out there in public helping or uplifting other women, which is so important in the current time that we are all in. So ladies, it's 2022. Let no man tell you what you're supposed to do. Don't let anyone tell you what you should be doing. Don't let anyone even touch you or put their hands on you. Because Prime Minister Narendra Modi, this year as we are celebrating Amrit Mahotsav from the Red Fort, has said that the upcoming 25 years will be focusing on women, and the fact that women have so much more to give to the country and the world now. Like I repeat, I want to end it on this note that it's 2022. Women are no longer meant to sit in the houses and look pretty. They are meant to get out and build empires. So with this and a lot more informative content that you need to know, make sure that you keep watching with me, Nation Plus News, and also do let us know what you have to say on this issue in the comments section below. Thank you. Like, subscribe and press the bell icon of our YouTube channel to get all the recent updates. Also, do not forget to follow us on Facebook, Instagram and Twitter.